of JD College of Engineering and Management take this privilege to welcome our today's expert speaker, Dr. Sanjay Haridas sir, for delivering expert lecture on IPR and copyright. Welcome sir. Now, I would like to give brief introduction of our honorable speaker. It is my honor to read sir's profile, and I thanks Dr. Amit Gupta sir for giving me opportunity to read sir's profile. Dr. Sanjay Haridas sir is Dean Academics in JD College of Engineering and Management, along with Professor in Electronics and Telecommunication Department. Sir is having a vast teaching experience of 33 years. Under Sir's PhD supervision, 5 scholars have got PhD. Sir is also having 2 patent and 9 copyright granted under his name. Sir have also written 1 book. Sir is having 29 publication in national and international journals. Sir is also having 9 publication in national conferences and 2 publication in international conferences. Today, we are lucky to have such an eminent personality with us. I think everyone is eager to hear from sirs. Now, I would like to invite our today's expert to please continue the proceeding. Sanjay sir, please sir. We are all waiting eagerly to hear from you sir. Please sir. Okay, thank you, sir. So do Our you want to dear share? sir, sir आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम लोग बहुत ईगर से सुनना चाहते हैं सर, और आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Okay, thank you, sir. Thank you, Amit, sir. Sir, should I stop my screen share, sir? Do you want to share the screen? Yeah, I want to share. Okay, sir. I'll stop my screen share. Do you get my screen? Yeah, sir. It is visible. And I am audible? Yeah, sir. You're audible, loud and clear, sir. Yes. So first I want to say thank you to first year department for giving me this opportunity to say something on IPR, copyright. And thanks to my dear students also, who are eager to listen something new for them, and which will be benefited them in future also. So should we start now? Imran sir, should we start? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Okay, sir. So the today's topic, student, is IPR. IPR stands for Intellectual Property Rights. Presently, you remember what is exactly the property? Property आपको अलग term से मैं मालूम है. So we are now categorize this property and then moving towards the intellectual property. So in this seminar or in this lecture, I want to tell you about something intellectual property. And when there is a property, you have to do the registration for those property, then and then you will be benefited. So there are certain laws, there are certain rights that we have to be, you must know when you are going to teach such a engineering branch. And so you must be in a position to invent something which is your own creativity. And when you are doing such a thing, then you must register for it. Then and then you will get the benefit from them, otherwise not. So whatever the picture I am showing here, certain mobile you will get, certain ceiling fan is a drawing, then all these pictures are intellectual property rights or intellectual property, I can say that. The person or the things which made by the human being are the intellectual property. ये सारी चीजें मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इवन कोल्हापुरी चप्पल भी आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है, because it is a brand, somewhat brand in for Kolhapur side.
Then mobile, Apple mobile, it is somewhat brand. So mobile itself is a property made by the human being. ये सारी चीजें अपन human being ने बनाई है. So ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो human being ने बनाई है, human ने बनाई है by their own creation, and then they are going to be register those products, register the things, and then they will get the license for that, and they will be benefited from that. So that's why what are exactly the intellectual property, यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे and धीरे धीरे एक एक करके मैं rules regulation बताऊंगा आपको, so that if you are doing certain creativity, if you are doing certain novelty, then you will be benefited in terms of monetary as well as in terms of recognition, in terms of reputation, whatever you want. That is only possible when you are doing your creativity registered. So that is even our property. If you have a building, if you have the house, you have to register it. Sale deed करना पड़ता है, registration करना पड़ता है, तब जाके that property gives you the benefit. Otherwise not. Whatever you have, if you have the car, you have to register it. Then and then it's benefit, or you can drive those cars. Otherwise not. So meaning is that whatever you are created, that should be registered first. And for those registration, what are the exact procedure that we have to be studied now today. Out of this, all this property, one property is a copyright property. I am going to tell about this property in detail. All property at a time, it is not possible to tell you. It is a quite big topic then. So we have to concentrate on one of the IPR, one of the intellectual property, that is a copyright. That is related to our education field, we can say that. That is related to your mind. So our basic introduction is, see, today we have to study the intellectual properties. What are those intellectual properties and how they are registered? What are the various laws, rules, regulation? What are the rights as an author you have, and so many things we have to be studying. So before that, I welcome you all. आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने सेमिनार के लिए आगे चलते हैं. So today we have to give a general introduction to the concept of intellectual property right, and in this intellectual property category, detail will be for the copyrights and their role in the technology transfer, how this will be publicized, how this knowledge get transferred to the others, but at the same time your benefits will be protected. All those rules and regulation we are going to be studied today now, and it is very helpful during your graduation. आपके graduation के लिए आपको कभी ना कभी तो copyright करना ही पड़ेगा from first year to final year. Every year I am expecting one copyright from here, but if it is not, then at the final year level you must do the copyright. That is our guidelines and that is our rules. So that's why this topic is important also from your curriculum point of view also. But not only curriculum, throughout your life, whatever you are doing creatively, that you can copyright it, that you can patentable, that you can say that that is your intellectual property, and you have to be registered. Then and then other will not benefit from it, other will not misuse that. Otherwise, all can be use your product, use your creativity and build their career on that, and you will not getting anything. So when you are saying that you have a certain creativity, then you have to register it. You must know the rules, regulation. You must know your rights. Then and then it will be benefited. Otherwise not. यहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ से registration करेंगे, कैसे registration करेंगे, क्यों करेंगे. All those things will going to be covered throughout this seminar. So it is very helpful to you. And something you are getting that is not you are studied up till now. Very few knowing this thing, no doubt about that. But most of the students are not knowing these things. So that's why we are taking this topic and presenting in front of you now. So before going to copyright, what are the exactly properties? Property means which have a certain value. The property means the things which have a certain value. That is called as a property. Then you have the two properties. Types of properties are tangible and intangible. Tangible property means it is physically present. You can touch them. It has a value, just like as a car, just like as a building, just like as a land,
just like as a paint. Car is a movable property. I can say that, while building land is a immovable property. I can say that if you are registered this, then and then you can get the benefit from this. आपको रहने के लिए घर मिलता है. That is one of the factor. But if you want to sell those properties, sell those house, then you have to register first. Otherwise, it is not possible. कोई भी plot लेते हैं अपन, उसका registry करनी पड़ती है. So that is certain. We have said that registration you have to do that for your property. This is a touchable property, means you can view this property, you can touch those, so it is the physically existed properties, all those. That is called as a tangible properties. But intangible property is one of the intellectual property, we can say that. जो आपको physically दिखती नहीं है, you cannot touch them, you cannot judge them, आपको उसका एहसास नहीं होता है, जो रहती है उसको intellectual property बोलता है. And since we have the brain, human has a brain, you must generate this intangible property. आप उसको generate कर सकते हो और लोग generate करते हैं और उसके ऊपर से वो फायदा उठाते हैं. Let us see how it should be now. So what is exactly the intellectual property? Now coming to our main topic, now we can say that an intangible personal property from mental process. आपके दिमाग से बनी हुई कोई भी प्रॉपर्टी रहेगी उसको इंटेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, यू आर इन्वेंटिंग सर्टेन प्रोडक्ट. आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, जस्ट लाइक एज मोबाइल जिसने भी बनाया, इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज हिज प्रॉपर्टी. दैट whatever you are, if you are written any novel, if you are written any poem, then it's your own property जो आपने अपने दिमाग से बनाई है. So we can call it as an intellectual property. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू द चेतन भगत नॉवेल, उसके ऊपर से 3 इडियट फिल्म बनाई थी उन्होंने. सो दिस नॉवेल इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो नॉवेल बना चेतन भगत का, जो उसने लिखा 3 इडियट्स, दैट इज वी कैन कॉल इट एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ चेतन भगत. सो ऑल राइट्स विथ हिम, and the producer without taking permission tried to make the film on that, and Chetan Bhagat objected on that, and then he got a lot of money from the producer. So that is the law says that, rules regulation says that, government rules says that you cannot use intellectual property without any permission. Permission के बगैर अगर आप intellectual property किसी की भी use करते हैं, then it is offense. And you will be fined for that. And therefore, but provided that that property is registered. If not registered, then you can then anyone can use your property. So whatever you are generated, whatever you are created, that must be registered, and that is the intellectual property right. अपन उसके ऊपर भी आएंगे. But before that, what is exactly the intellectual property? So any inventions, एनी लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, आपने एक आधा पेंटिंग भी बना दिया, आपने एक आधा म्यूजिक कंपोज कर दिया, विच इज ओरिजिनल वन, विच इज न्यू वन, तो इट कैन बी ए पेटेंटेबल और इट कैन बी ए कॉपीराइटेबल, वी कैन कॉल इट एज. देन कोई लोगो डिजाइन करता है, आपने कंपनी बनाई एक आधी, उसका लोगो डिजाइन किया आपने, सो इट इज ए पेटेंटेबल, इट इज ए ट्रेडमार्क, वी कैन कॉल इट. इट इज आल्सो द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कोई भी सर्किट का डिजाइन बनाया, कोई भी सर्किट का डिजाइन बनाया आपने, कोई भी आपने पीसीबी लेआउट डिजाइन किया, तो दैट डिजाइन कैन बी आल्सो कॉपीराइटेबल. इट इज आल्सो द पेटेंटेबल आल्सो. नेम्स एंड इमेजेस, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल द कोका कोला इज द नेम ऑफ अ सर्टेन ब्रांड, इट इज पेटेंटेड, वो पेटेंट किया हुआ है उसको, इट इज आल्सो द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, all these are the intellectual property. You cannot use as it is. अगर आपको कोई कंपनी खोलना है और उसको भी आपने नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट, then you will be in wrong box. आपको उसके wrong box में आ जाएंगे, because that Microsoft name is registered under this intellectual property rights or act. And therefore we have to say that whatever the intellectual property you have or you created, that it should be registered first. And then you can claim on that, otherwise not. A lot of discussion is going on. For example, हल्दी रहती है जो अपनी हल्दी रहती है, उसका पेटेंट इंडिया के पास है, लेकिन अदर कंट्रीज आर क्लेमिंग ऑन दैट.
and India is argumented on that. So meaning is that that discussion or that argument is going on in the court, and then you have to only go to the court. That is only the option, and you have to prove that it's your original product. Meaning is that whatever you are created, it should be registered first with the government offices. Otherwise, it not be your property. वो आपकी property नहीं रहेगी. That you have to be remember. So moving further now, we have to discuss some of the major intellectual properties. एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे और बाद में कॉपीराइट पे अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे. What is this now? Anything under the sun that is made by a man can be a intellectual property. That is a very broad definition. We can say that anything under the sun, ये यूनिवर्स में जो भी है, that is made by a man can be a intellectual property. वो सभी आपके intellectual property हो सकता है. एक आधे बिल्डिंग का डिजाइन, if it is a novel one, if it is innovative one, you can register those so that the same logo, same design cannot be used by other peoples. So all these are the intellectual property, and only if it is your intellectual property, what says that it is your intellectual property only if you are registered. If you are not registered, then world cannot say that it is your intellectual property. So whatever you are created, that will be definitely registered, and that is possible only. ये possible हो सकता है. आप सोचोगे ऐसा क्या है कि आप डिजाइन कर सकते हो. आप सोच के देखो, एक आधा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना लिया आपने जो पहली बार बना हुआ है. एनी वन ऐप ऑल्सो, आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हो, आप कोई भी सर्किट बना सकते हो, कोई भी आपने पोएम भी लिखी है, पेंटिंग भी निकाला है, आपने जो कुछ भी किया है उसको रजिस्टर करोगे. इवन आवर पीपीटी ऑल्सो, मेरे बहुत सारे पीपीटी मैंने रजिस्टर करवा ली है, कॉपीराइट लिया हुआ है उसका. बुक्स मैंने रजिस्टर करवा दिया है. सो एनीवन कैन नॉट क्लेम ऑन दैट. So whatever my intellectual property, whatever my knowledge I am putting into the PPT, and that is going to be registered. वो register हो चुकी है सभी. Same cannot use as it is. तो बाकी लोग उसका misuse अभी नहीं कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं. Because I am not taking the license. मैं बाद में आने वाला हूँ उस पे. मैंने उसका लाइसेंस नहीं लिया है, तो लाइसेंस नहीं होने के कारण what happens, it is and anyone can use it, but they cannot claim that this PPT is mine. No, it is made by me, so copyright is with me. If anyone claim on it, then I can case on him. That is the only solution for that now. So one of the intellectual property, we can say that. What is exactly patent? If you are devised up, if you are invented, if you are designing a certain new product for any company, or if you are designing any certain process for execution of a certain functions, if you are inventing certain material which is not presented or which is not existed, then all these can be categorized as a patent. Basically it is related to industrial product. जो कुछ भी अपन नया बनाते हैं, नया अपन अचीव करते हैं, अपन टेक्निकल पीपल है तो ज्यादा से ज्यादा अपन बात टेक्निकल करेंगे most of the time. So whatever you have the knowledge, if you devise a certain products, if you are design a certain process, that can be patentable. Meaning is that if it has a novelty, कुछ तो भी नया है उसमें, उसको इन्वेंट कर उसको पेटेंटेबल कर सकते हो, पेटेंट ले सकते हो उसका. So if you have the invention, if you have the novelty, if you have the solution to any problem, technical problem, then you have a certain patentable product you are designing, and it can be patentable. You have to register with the patent office. हमें बहुत सारे पेटेंट ऑफिस है, 5-6 जगह पेटेंट ऑफिस है, नागपुर में भी है पेटेंट ऑफिस. So you can register with them and say that it is your product. And then what is the benefit of this now? Once you invented a certain product, any industry can approach to you. It is your product, they want to manufacture it and sell it, they have to take the permission from you. इंडस्ट्री को आपसे परमिशन लेना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है और सेल आउट करना है. उसमें उनका बेनिफिट है, इसलिए इंडस्ट्री आपके तरफ अप्रोच हो सकती है. लेकिन प्रोडक्ट शुड बी ऑफ दैट कैटेगरी, ऑफ दैट लेवल, and then industry will approach
Otherwise, you can invent your product, you can make your company and then sell out those products. That is also the possible. So meaning is that it will be benefited legally to you. आपको recognition मिलेगा एक बार कि आपने एक product बनाया. It is only known to people when you are going to be registered. अगर आपने इन्वेंशन किया, आपने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा? So you have to register, and if it is registered, then it is open to all public. With the says that legal license with so and so. So then all you will get the recognition. There is a chance to get the money from them, and so many other advantages are also one by one we have to study. So one of the type of the intellectual property is a patent. So it is related to somewhat technical thing. You can devise your product and you can manufacture your product, and you have to take the license from that. Then industrial design. Any product has a certain design. What is exactly it is now? External features appealing to the eye. अपन जब देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो अपने को उसको अट्रैक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाते हैं. Just like as the Coca-Cola shape of the bottle. If you observe the shape of the bottle, then it will be industrial design. It can be intellectual property. कोई एक प्रकार की intellectual property है कोका कोला बोतल का साइज और उसका शेप जो बनाया है इससे. तो दिखने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो भी अलग है, बाकी बॉटल से इससे अलग है. Other bottles may have the different shape, but not the same shape of the Coca-Cola bottle. Because intellectual property and Coca-Cola registered it. Coca-Cola registered it. Therefore, other people cannot use such type of the shape of those bottles. We can call it as the industrial design. उसको बोलेंगे अपन design किया. New shape, pattern or configuration indicates the origin goods or services. All these are the terms coming under industrial design. एक आधा गहना बनाया आपने, आप देखते हो कि अपन शॉप में जाते हैं, कोई भी शॉप में जाइए, आप देखोगे कि you have got a variety of the designs of the ornaments, and all are the intellectual property of someone. किसी ने तो भी उसको डिजाइन किया है. अपने गहने के बारे में बात करें तो लड़कियों को ज्यादा पता होगा कि अपने गले में जो भी रहता है लेडीज लोग पहनते हैं, all have a different dimensions, different designs, and all are the industrial design, we can call it other. All the designs are patentable, copyrightable, and all we can register all those designs. So no one take the benefit from them. अब वैसे के वैसे डिजाइन करके उसके ऊपर कमाना है तो you have to take the permission from the owners. जो भी इसने बनाया उससे permission लेना पड़ेगा. So we can say that aspect we differentiate from current products only in the visual form of the product, not the technical. Technical उसमें कुछ भी अपन ने करे नहीं. Gold तो वैसा ही है. Gold तो as it is the original product. जिसने भी लिया होगा उसके ऊपर patent और copyright, तो वो gold के ऊपर अपन नहीं बना सकते. It's a technical matter. But gold को convert किया किसी design में, then it will be industrial design. Then it will be design. Then we can say that the ornament three-dimensional features such as the shape, surface or texture of an article. उसके थ्री डायमेंशन बोले तो उसके साइज शेप देख सकते हैं आप, किस शेप में उसको बनाया. Surface, whether it will be smooth or it will have a certain lines, or whether it will be have a design. Nowadays, plain gold is never come. You have a certain designs on that, all those ornaments and all those gold-plated jewelry. So all these can be the intellectual property. We can call it as a design. उसको अपन design बोल सकते हैं. For example के तौर पे, you observe all such now. What I am showing ornament. This can be industrial design. Chair बनाई है अपन ने. So all these are can say that it is a design. It is benefited to you get certain what support to your back also. This is car. We can say that Audi car or Mercedes car, whatever you have, every car has a different design. So no one can make a replica of those design. Even ladies की जो sandal heel रहती है, all these are dimension, all these are the designs can be, we can register this and we can get certain benefit from this now. Shoes, जो भी शूज एक्शन शूज ले लीजिए और बाकी जो आजकल नए नए शूज आ रहे हैं, इवन जो साइन होता है उसके बीच में
tiger can also palatable or it can be all steering clothes, SOML bottle or whatever the bottle you have, all this design of this bottle can be, we can call it as a design, and we can register it. Once you register this, you will get the benefit. Benefit है कैसे लेंगे अपन देखेंगे धीरे धीरे करके. So you have now patent, you have now the design idea. Now next one is the trademarks. Generally brand logo, whatever used on the product, that can be called as a trademarks. Coca-Cola जो लिखा है Coca-Cola symbol, Coca-Cola letter जो लिखे हैं, that can be said to be trademark. It is a logo. Intel अपनी चिप होती है IC, उस पे Intel लिखा रहता है. Intel has a certain dimension, certain features, how it is written there, all can be said to be trademark. A visual symbol which may be a word, signature, name, device, label, numericals and combination of colors, all we can call it as a trademarks. वो सभी एक गुड्स पे लिखे रहता है, अपन एक एक करके उसको स्टडी करेंगे अभी. So whatever we can call it as, all such a type of the logos, such a type of letters, combination of letter, Microsoft जैसे लिखा है, Coca-Cola जैसे लिखा है, Pepsi जैसे लिखा है, all these are called, we can call it as a trademark. All are the examples of trademarks. Yahoo, Coca-Cola, Honda, McDonald, Mobile, Pepsi, Toyota, Nokia, whatever you can return. ये अपन सभी हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं. Nike, all these are the trademarks and they are registered trademarks. They are registered symbols and therefore no one others can use these symbols. अभी मेरे को कुछ भी ओपन करना है, प्रोडक्ट मैंने डिवाइस किया, I can't use this now because it is now registered with the Nike, it is registered with the BBC, it is registered with the Walmart. I cannot use these names for my products or for my company. And therefore, because it is identified as a trademark for a specific company, for a specific organization, because they are registering these trademarks to their names. So that's why we cannot use it directly. अपन इसको directly use नहीं कर सकते हैं. If we are using this, then we have to pay the penalty for it if the corresponding organization claims for it. So that is called as a trademark. So trademark बनाना अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, it is the intellectual property. ये सारी intellectual property के एग्जाम्पल है. गॉड ने थोड़ी बनाया है, नेचर ने थोड़ी बनाया है, ये ह्यूमन ने बनाया है, आदमी ने, इंसान ने बनाई ये सारी चीजें. तो इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है फॉर ए पर्टिकुलर थिंग. If it is not there, then it will be not a registered trademark. Then anyone can use that. Then what is the geographical indication? Certain things have geographical indication. For example, is now I can say that famous for oranges. अपन नागपुर संतरे होता है. It is famous for Nagpur oranges. So it is again the intellectual property related to our Nagpur, related to our territory. So no one, if any oranges come into the market, they can't say that they are of Nagpur. No, it is not like that. Oranges made up or oranges Nagpur में काफी सारे बनते हैं. So Nagpur has a patent for that or has intellectual property for Nagpur. तिरुपति का लड्डू, तिरुपति में जो लड्डू मिलते हैं, that is the geographical indication of that लड्डू. No one other can say is that. कोई भी लड्डू आएगा बाहर से और उसको तिरुपति का लड्डू बोलेगा, then it will be objectionable. कोल्हापुरी चप्पल, we can say that Kolhapuri has a particular style to make those chappals, and it has a geographical indication. Kolhapur will indicate the city name of the Maharashtra, and it will indicate that it is famous for in the name of the Kolhapur. Basmati rice, you can say that. Darjeeling tea, you can say that. All those are the geographical indication, and according to the geographical, certain things, certain objects are very famous, and they have the copyright or they have patents on that name now. All these are the example of this geographical indication.
कोई भी टी रहेगा उसको दार्जिलिंग टी नहीं बोलेंगे अपन, दार्जिलिंग से आई हुई टी को ही दार्जिलिंग टी बोलना पड़ेगा. फ्रॉड हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग. Anyone can say that it is a tea coming from Darjeeling, but that is not like that. Darjeeling has a patent typical smell, typical taste of the Darjeeling tea. No other tea has that much taste and the smell. So we can easily identify which is a Darjeeling tea, which is a basmati rice, which is Kanchivaram silk. Ladies लोग पहनते हैं, कांजीवरम सिल्क पहनते हैं. It is from Kanchivaram silk saree, we can call it as Alfonso. अपने कोकण में बनता है Alfonso mango. So all these are the geographical indications which has a registered these products in the government office. So no one can claim on this now. So many examples are there. So I am taking very few examples. So on the geographical location, on the territorial location, all these products are registered and therefore they have a particular value. उसकी value. अपन आज भी बासमती rice has a more value because of its taste, because of its smell and so on thing. So anyone cannot claim this is basmati rice. So it has a value, more value. तिरुपति लड्डू के अलग ही क्वालिटी होती है उसकी. No one can make such type of the laddu. So many things are there. So they have the certain value and since they are registered with this name, तिरुपति लड्डू के नाम से उन्होंने registration किया है उसका. Alfonso registered in the name of this Alfonso mango from by Kokon. Then basmati rice. So all these are related with your territory, with your area, and accordingly this copyright or accordingly your patent can be filed or register your products. Then trade secret. What is the exactly trade secret? Trade secret can we say that best example is the Coca-Cola again. Coca-Cola जो cold drink होता है या Pepsi cold drink होता है उसका एक formula बनता है. उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे अपन कोका-कोला और पेप्सी दोनों की टेस्ट अलग है. उनके अलग-अलग इंटीग्रेट अलग-अलग प्रोपोर्शनेट से बना डाले जाते हैं. So ice cream, so many ice creams are there. All ice cream has a different flavor. All ice cream has a different ingredients. So we can say that what are the formula used to prepare those Dinshas ice cream, then Amul ice cream, then so all other ice creams, they have a different formulas. And all this formula, they will never open this formula. They are always keeping in secret. And so they are registering this formula. किस प्रमाण से उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक में, ये सारे वो छुपा के रखते हैं. Because other one will be copy for that. And therefore such a secret, if company has such type of the secrets, then we can call it as a trade secret. एक ऐसे particular technical device भी लीजिएगा, it has a particular function, and how it will be manufactured, no company will tell you. ये सारे company अपने product रख देते अपने पास. So no one can copy their design. उसका डिजाइन कॉपी कर नहीं सकते. आप देखिए मोबाइल, एवरी मोबाइल हैज अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट फंक्शनैलिटी, इंटरनल प्रोग्राम्स विल बी द डिफरेंट. उसमें जो हार्डवेयर यूज होता है वो अलग होता है, उसमें जो प्रोग्राम यूज होता है वो अलग होता है, क्योंकि all the companies are keeping their secrets confidentially, and therefore we can say that it is a trade secret. उसको trade secret बोलते हैं. And every trade secret should be registered with the government office. उस country के government office में उसको registration होना चाहिए. Then it will be possible. And last one is the copyrights. Copyright, that we have to concentrate on this. What is exactly the copyright? Any artistic, literary, musical, dramatic creation by the human being can be copyrightable. So whatever you are written, if you are written any book, if you are written any novel, if you are written any poem, if you are drawing painting, if you are composing any song, if you are creating any drama, if it is your, if you are written or if you are converted any novel to the dramatic, then that drama becomes a copyright with your name.
कोई भी नॉवेल पे नाटक बनते हैं, सिनेमा बनते हैं, वो सिनेमा जो होता है या नाटक जो होता है, उसके जो प्रोड्यूसर है वो सिनेमा और नाटक को प्रोड्यूसर के नाम से रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो कथा है, ओरिजिनल जो स्टोरी है, दैट इज फ्रॉम द नॉवेल. So story has a right with the author, but the dramatic representation of those novel will with the producer of those cinema or natak. So that is two different thing. एक एक करके अपन वो भी देखेंगे. So meaning is that whatever you have creativity, आपकी जो भी creativity है, if it has a certain novelty, it has a certain some innovation, then it can be under copyright. कॉपीराइट के अंडर वो रजिस्टर होता है. और ऐसे बहुत सारी चीजें आज अपन देखेंगे कि क्या क्या आप रजिस्टर कर सकते हो जो आपके इजीली पॉसिबल है आपको करना. सो मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द कॉपीराइट्स. You have to take the copyright for those literary work, for this your dramatic work, for this your artistic work, whatever you can call it as a, इसका copyright आप ले सकते हो. Once you take the copyright, then it's your intellectual property. वो रजिस्टर करने के बाद में वो आपकी खुद की intellectual property मिलेगी. So what is exactly the intellectual property? क्या क्या उसके अंदर आता है? How it will be registered? Then how you will be benefited, and what are your rights if you are registered it, then what are your rights, whether it is transferable rights or not, all those things we have to be studied now. एक एक करके अपन स्टडी करेंगे कॉपीराइट्स के बारे में. then why protect intellectual property? कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपन इतनी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखी है, पेटेंट से लेके कॉपीराइट तक, then why it should be protect? Why it should be registered? Because stop other using you have created without your permission. नहीं तो क्या होगा, आपने कुछ भी पोएम बनाई तो बाकी बोलेगा कि मेरे उसके नाम से वो लिख के भेज देगा किसी भी पब्लिशर के पास. एंड देन यूर पोएम विल बी, ऐसा होता है बहुत बार, यूर पोएम बिकॉज पीपल डोंट नो द राइट्स, पीपल लॉज को जानते नहीं है डेट्स में. आज के डेट में आज मैंने कोई भी किताब लिखी, if it is open to all, then anyone can say that this is his book, this is his poem, and what he changed my name to and put his name and go to the publisher, this is his book. If I am not registered, if I am not taking the copyright for that, and that if you don't want such type of the misuse, then you have to register it. You have to protect your intellectual property. Exclusively can demand higher sale prices. If you want to come, if you want to generate any income, you have to take the license, you have to take the register, you have to sell those products. Sale भी आप नहीं कर सकते हैं, अपने बुक का आप खुद सेल नहीं कर सकते हैं. Unless and until a certain rights with you, you cannot sell it. You cannot get the income from this. Income के लिए आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा. Then investor भी कैसा क्या, पब्लिशर आपके पास कैसे क्या आएगा? If he knows that this book is good book, then and then investor will come to you, publisher will come to you, depending on your reputation, depending on your work, whatever you're doing now. So therefore you have to protect your property, otherwise you cannot be benefited from this. Now coming to the important point is, what is intellectual property right? IPR. IPR is a means of protecting the results of innovation and creative activity of the mind. जो आपने क्रिएटिविटी की है, अपने माइंड से की हुई है, अपने दिमाग से की हुई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसको बोलेंगे IPR. And every government has such type of the state of the IPR. उन्होंने डिफाइन किए कि IPR के अंडर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, उसका क्या यूज होना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है. Protection of the owner's right to protect or profit from the use of his or her property. कोई भी आपके प्रॉपर्टी का मिसयूज कर सकता है, आपके प्रॉपर्टी के द्वारा कोई भी मनी जनरेट कर सकता है. If you want to restrict those, you have to copyright it, and you have to take the intellectual property right of those products, of those literature, then and then it will be possible. So IPR is a legal right.
Basically it's a legal process. So whatever you are getting the legal rights, then you can claim on that, then you can struggle for that, then you can case on misuseness of your product. Huh? Then you create a monopoly. Nowadays this monopoly concept is going because market is very free now, so anyone can divide. हर एक दिन अपनी technology change हो रही है, so whatever you are invented, it is not unanimous product for longer time. For small duration only we can say that it will be a monopoly for those products. Other will be in the competition, other companies will come together and prepare your product, and then we can say that your monopoly will not be there, for it is a very short duration. IP rights are negative rights. What is exactly the negative right? It will restrict to others not to misuse it. It will restrict to others not gain the profit from the others product. आज मेरा प्रोडक्ट है, आप लोग बोलोगे कि इसके ऊपर से मैं मनी कमाता हूँ, तो on that sense you will not get the money from my products, because it is a patentable product, patented registered product of me, so you cannot make a money on it. If you make the money from those products, then you will be punishable under this act. So that's why in the sense that it is a negative rights. IP rights are territorial, area wise भी रहता है, जैसे कि लड्डू हो गया, कोल्हापुरी चप्पल, all those rights can be area wise, and all these asset can be sold out, can be licensed, can be published, can be we can say that distribute. आप फिल्म बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके अलग अलग, प्रोड्यूसर तो फिल्म बना के छोड़ देता है, डिस्ट्रीब्यूटर हैज इट्स ओन राइट कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, outside the world, outside the India also. So meaning is that distribution, publishing, reprint, एक किताब बना दिया, 2 साल के बाद उसका reprint करना पड़ता है, नया edition निकालना पड़ता है. So all those rights can be possible if your property is registered property, it is come under the IPR. आपकी जो property हो IPR के अंडर आ रही है, तो this can be possible सकता है. Then IPR, intellectual property rights, accepted all over the world. Why? Because provide an incentive to individuals for new creation. monetary benefits मिल सकता है जो क्रिएटर रहेगा उसको, इसलिए वो कंपनी रहेगी या इंडिविजुअल रहेगा, जो कोई भी रहेगा. So that's why they are accepted those things. It gives you the recognition. It gives. Hello, any problem? Any problem? Imran sir. Hello. Gupta sir. I am audible? Yes sir, yeah. Yes sir. Excuse me sir. Hello. हेलो. Yes sir. कोई डाउट किसी को? हाँ sir, means sir, Bitcoin is also an intangible property. Your audio is not clear. Kindly repeat. Sir, Bitcoin is also an intangible property. No, Bitcoin is different. It's not it as a property. It is something different. उसका मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते अपन. So you don't say that it is not a. I mean, it can be a registered product. I don't know about it. Intangible. But Sir, suppose if I made a character for a company, if the right of character is or that company, right of that character belongs to me or that company. You have to register it with the name of company or yourself. If suppose if I made an engine
and before I patent it, someone copied it, and I have a proof that he copied it. That will be not under the copyright. Okay. हेलो मॅडम, कोणी प्रेझेंट नाही आहे? कोणी प्रेझेंट नाही आहे इथे ऑनलाईन? हॅलो, engine cannot be a copyrightable. Engine That is means a anyone can copy that design. design. Design is industrial design. It's not a copyrightable. It's a patentable. आपको सर पेटेंट लेना पड़ेगा आई उसका. मीन इंजन डिजाइन, मतलब आई मीन इंजन डिजाइन मतलब मैंने एक अलग तरीके से अपना इंजन बनाया, कोई एक अलग टेक्निक, अलग तरीके से, अलग सिस्टम के साथ, तो क्या फिर वो इंजन पे मेरा कॉपीराइट बैठ सकता है क्या? उसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट कॉपीराइटेबल, इट इज पेटेंटेबल. पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाते हैं या डिजाइन करते हैं उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ेगा. पहली बात तो वंस यू पेटेंट टेक ए पेटेंट देन इट इज यूर प्रॉपर्टी. आप कॉपीराइट नहीं ले सकते उसका, आप उसका पेटेंट लेना पड़ेगा आपको. एंड इफ यू आर टेकिंग द पेटेंट देन इट्स यूर प्रॉपर्टी. Then any industry can come to you and ask your permission for manufacturing those engines with your design. सर And सपोज get मैंने money पेटेंट from- करने से पहले किसी ने कॉपी कर लिया, तो फिर Then- क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? है नहीं, उसने पेटेंट निकाल लिया उसका, तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे. जो पहले करेगा उसको राइट्स मिलेंगे सारे, उसको बेनिफिट मिलेगा. So it is if it is your product. आपने वो टार्जन द वंडर कार देखी थी फिल्म? यस सर. हाँ, उसमें ऐसे ही हुआ था. कार डिजाइन चुरा के उन्होंने उसका कार मॉडल बनाया था और जो एक्चुअल ओनर उसको मिला ही नहीं उसका बेनिफिट. तो सच केसेस ऐसा होता है, बिकॉज इट्स वर्ल्ड में तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है. लेकिन अगर आपका डिजाइन है तो यू हैव टू मेंटेन योर सीक्रेसी. And if it is final, then you have to make its patent. That is only the choice with you. If you are not making your patent, then you will not be benefited from those products. Okay sir, thank you. But he proved then also he will not get. If I have a proof that company copied, so Then you have to raise your complaint, go to court, prove that it will require your money. मैं कब क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं है. If it is proved that your design, then may court will issue the order and patent for your name. But then it's a different story. अब मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ, केस लड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं. If you have the design, you have to maintain its secrecy, take the patent, and then go to the company. कि भाई this is the design. Whether you will going to manufacture or not, the company will approach to you. But if you don't have the patent, then you have to go to the court. If such a malfunction happens, then you have to go to the court and struggle for that. क्योंकि ये लड़ाई ऐसे छोटी नहीं होती ना, करोड़ों में रुपए कमाते हैं लोग इससे, तो ये लड़ाई छोटी थोड़ी होगी. अपन 1000 वाले लोग हैं, कंपनी वाले जो बड़ी बड़ी कंपनी रहेंगे वो तो करोड़ों में खेलते हैं. तो ऐसा प्रोडक्ट वो ऐसे कैसे खरीद सकता है? ऐसा तो अच्छी कंपनी तो कोई करेगा नहीं. कोई करेगा तो ऐसे जो चोर लोग रहता है वही लोग कर सकते हैं ऐसा, और वो कुछ भी कर सकते हैं. फिर आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. सर जैसे अभी मार्वल का केस चल रहा है, मतलब उनके कुछ राइटर्स ने कुछ कैरेक्टर बनाए थे पहले, अब वो उनपे केस कर रहे हैं कि हमको हमारे कैरेक्टर हमने आपके अंडर में बनाए थे, तो क्या अब राइट्स किसके पास होंगे फिर? कि मार्वल के पास की? तो प्रूव होने के बाद पता चलेगा कि किसका सही है और किसका गलत है. ये तो कोर्ट देखेगा. दैट इज नॉट इन अवर हैंड. वो ज्यूरिडिक्शन में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर नहीं आएगा. कोर्ट विल कॉल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स and see that which is when the corresponding person is file those register those products, and then certain conclusion will be drawn by the court and he will issue the order. वो अपने हाथ में नहीं है फिर. सर अगर मैंने पेटेंट सिर्फ नागपुर या फिर इंडिया में कर दिया और समझ लो बाहर अमेरिका वगैरह ने किसी ने वो कॉपी कर लिया,
तो फिर क्या कहूंगा सर? फिर मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता हूँ? ऐसी केसेस हो रही है, जैसे कि मैंने हल्दी का एग्जांपल बताया। हल्दी बेसिकली इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया एंड नाउ क्लेम आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कि ये हमारा प्रोडक्ट है करके, बिकॉज इट इज हल्दी इज वेरी मीन्स औषधि है, हल्दी औषधि में काफी यूज होती है। लेकिन उसके लिए अभी स्ट्रगल चालू है इंडिया का, इट इज नॉट स्टिल। अभी सुना है कि अभी इंडिया के फेवर में डिसीजन आ गया उसका, तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ता है उसके लिए। You have to go to international court and there you have to prove it whether it is your product, Indian product will be accepted or copied by other countries or not. वहां पे इंटरनेशनल हर एक कंट्री का ये अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का पेटेंट एक्ट अलग होता है, अमेरिका का अलग होगा, अदर कंट्री का अलग अलग होता है। तो आप कहीं पे भी करो इसको, इट इज योर राइट। इफ यू आर अर्ली इट इज योर राइट, बट देन यू हैव टू प्रूव इट। अगर किसी ने कॉपी किया तो आपको करना पड़ेगा उसको कि आपका पहले आपने कॉपी पेटेंट लिया था करके उसका। सर जैसे मैंने सुना है कि एनिमे अगर इंडिया जापान के बाहर कोई बनाता है तो उन पे कॉपीराइट बैठ, अगर समझ लो मैंने बनाया पर थोड़ा अलग तरीके से बनाया, तो क्या फिर मैं उसका कॉपीराइट ले सकता हूँ कि वो कॉपीराइट जापान? अलग तरह से बनाया आपने, इसमें नॉवेल्टी आ गई। यू कैन टेक ए पेटेंट, यू कैन टेक ए पेटेंट, कॉपीराइट व्हाटएवर यू वांट, बट हर एक चीज का पेटेंट नहीं ले सकते। आपने किताब लिखी तो उसका पेटेंट नहीं होता बेटा। हाँ, आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया, कुछ प्रोडक्ट बनाया उसका, तो इट विल बी पेटेंटेबल। तो पेटेंट का डिफरेंस है अलग, पेटेंट और कॉपीराइट में फर्क है। कॉपीराइट इज एप्लीकेबल फॉर आर्टिस्टिक लिटरेचर वर्क, जो रिटन वर्क है, जो पेन पेंसिल से बनाते हैं, उसको अपन कॉपीराइट ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर कुछ इंजन बना लिया, example, patent of that, not copyright. ओके सर, थैंक यू। So moving further now, बाद में अपन लास्ट में सारे क्वेश्चंस आपके वन बाय वन कंसीडर करेंगे। कोई तुमच्या पैकी प्रेजेंट नहीं है इथे, नहीं है? कोई प्रेजेंट नहीं। Okay. So this is example. Our original slide number 1 is again copied here. This is a one product, Coca-Cola bottle. It can be patentable, it can be trade secret property, it can be trademark, industrial design. Means only single product you have which have the different intellectual property. What is trade secret? Trade secret about the formula, the drinks made by those formula. जो भी इनमें integrants होंगे, what is the composition of those integrants and in what proportionate, so that the Coca-Cola drink is prepared. That trade secret will be a intellectual property. Patent hold this product of this Coca-Cola from drink to your bottle shape and all those can be patentable. Industrial design, the shape of this bottle will become the industrial design, while the Coca-Cola जो लिखा है, symbol जो बनाया है, it is come under the trademark. Means product is single. Coca-Cola bottle drink is a single product which can come under this 4 different intellectual property. And independently they can be registered. पेटेंट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो सकता है, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के कैटेगरी के अंडर हो सकता है, ट्रेडमार्क के अंदर हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट के अंदर हो सकता है, एंड सो ऑन. लड्डू एंड चप्पल्स, these are the again patents. Mobile is a patent, ceiling fan is a patent. उसका जो डिजाइन है that can be patentable. बट यहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह बनाया है, ये सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन कंसेप्ट में आए, इस कैटेगरी में आएंगे. यहाँ पे एप्पल में देखोगे, एप्पल का जो सिंबल है, एप्पल बाइट का जो सिंबल है, दैट कैन बी कम अंडर द ट्रेडमार्क. सो मीनिंग इज दैट any single product can come under the different IPR case, different intellectual property categories.
every category you can register with the government offices. Then and then you can say that your symbol will not be used by other, your secret formula will not be used by other, your product will not be used by other. Otherwise you don't have any right. तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप पेटेंटेबल कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट कॉपीराइट कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट आप डिजाइन में आ सकता है, कौन सा प्रोडक्ट आपका ट्रेडमार्क में आ सकता है। यहाँ पे जैसे कि मोबाइल कैन बी ए पेटेंटेबल, बट उसका जो सिंबल है एप्पल कंपनी का, ये एप्पल कंपनी इंडिकेट करती है, ये वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ये कोका कोला, ये जो लिखा हुआ है वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। बॉटल का शेप जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन कैटेगरी में आता है। इसका जो फॉर्मूला है ड्रिंक्स बनाने का वो ट्रेड सीक्रेट के अंदर आता है, और पूरा ये जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट करके अपन लिख सकते हैं। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ऑल दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन वैलिडिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कितना वैलिडिटी रहता है। पेटेंट लेते हो आप तो इट इज वैलिड फॉर 20 years, बट यू हैव टू रिन्यू इन एवरी ईयर। आपने कोई भी टेक्निकल चीज का या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का पेटेंट लिया तो इट शुड बी रिन्यू फॉर एवरी ईयर कंपल्सरी। ट्रेडमार्क जो बनाते हैं इट इज ए लाइफ लॉन्ग। आप कोई एप्पल सिंबल सालों से आ रहा है उतना सेम सिंबल टू बी यूज्ड, but you should be renewed after 10 years. Then design after 50 years. Then copyright, it will be validity for this copy 60 years after the life. Means आज मैंने नॉवेल लिखा है तो मेरा नॉवेल जो है वो मेरे लाइफ के बाद 60 ईयर तक वैलिड रहेगा मेरे नाम से। मेरे नाम से वो 60 ईयर्स तक वो वैलिड रहेगा। दैट एंड इसको रिन्यूअल करने की जरूरत है। Whatever I am doing in the copyright, renew करने की उसको जरूरत नहीं है। So that is the advantage of this copyright. So we have to see that what is exactly the copyright. That's why the title comes copyright and the related right. Advantage is that it is not renewable. Renew करने की जरूरत नहीं है। Validity is for throughout the lifelong plus 60 years. मरने के बाद भी 60 साल तक मेरा नॉवेल जिंदा रहेगा, मेरा किताब जिंदा रहेगा विद माय नेम। सब जन मेरे को अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए, अगर मेरा सही में यूजफुल होगा तो। सो दैट्स व्हाई एंड मोस्ट सिंपल दिस इज मोस्ट सिंपल, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक एट दिस योर लेवल। आप जैसे जैसे सेकंड थर्ड ईयर में आओगे अपन बड़े कैसे लेते पेटेंट्स वगैरह वो सारा पढ़ाएंगे आपको। At this point, you have to concentrate on the copyright because it is the first, simplest form of the intellectual property that you have to take registered. Copyright comes into existence as soon as the work is created and protect skill and labor employed by the creator. जैसे ही मैंने कुछ नॉवेल लिखा, it will be existed as soon as I want to publish those novel, I want to publish those literature, my literature, then it can be a copyrightable. जैसे ही मैंने तैयार किया उसको मैं कॉपीराइट कर सकता हूँ, उसको कुछ पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। Need to show who, when and how created and prove ownership. ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को दुनिया को बताना पड़ता है कि जो भी मैं एक आधा पेपर लिखा, मैंने एक आधा बुक लिया, सारे स्टूडेंट को मेरे मालूम होना चाहिए, अदरवाइज नो वन विल यूज इट। उसका फायदा क्या होगा? मेरा नॉलेज आपके तक तभी पहुंचेगा जब आपको पता चलेगा कि मैंने किसी किताब लिखी है, मैंने कुछ पेपर लिखा है, मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, ये सारे वर्ल्ड को बताना चाहिए। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड दे कैन रेफर दोज माय लिटरेचर एंड देन दे विल अप्रिशिएट। फॉर एग्जांपल जर्नल में हम पेपर लिखते हैं, कोई भी आप आगे चल के लिखोगे पेपर, so it will be referred by next generation, it will be referred by other peoples for their research, and they will quote the reference of my paper in their work. जो भी काम करेंगे मेरे आगे लोग, अगर उन्होंने मेरा पेपर रेफर किया है तो रेफरेंस में मेरा पेपर डालोगे, and that have a credit, उसको भी क्रेडिट है मेरे आर्टिकल को, मेरे पेपर को कितने रेफरेंसेस यूज किए हैं, कितने लोगों ने मेरा आर्टिकल देखा है, ये दैट हैज अ क्रेडिट टू मी, वो मेरा क्रेडिट पे जाता है।
And so you don't say that once it is published, though it is useless. No, it's not like that. If it is published, it's a very good thing. Then how many people refer those paper? That is important. That is the outcome of my work. आउटकम बोलते हैं ना अपन, आउटकम और आउटपुट में फर्क होता है. एक आधे ने ब्रिज बनाया, कितना स्ट्रांग ब्रिज बनाया उसने, कितना डिजाइन बनाया, इट्स आउटपुट ऑफ दोस ब्रिज. बट कितने लोग उस पे से ट्रैवल करते हैं, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, इट्स आउटकम. सो नाउअडेज वी आर लिविंग इन ओबीई सिस्टम. ओबीई मैंने बताया था आपको, आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Whatever I am publish my work, whatever I am copyrighted my work, then how many people use those work is important thing. पब्लिश करके काम नहीं होता है. पब्लिश करके मेरे को बहुत कम क्रेडिट मिलेगा. कॉपीराइट उसको बोलेंगे अपन आउटपुट ऑफ माय नॉलेज, आउटपुट ऑफ माय वर्क इज पब्लिकेशन. बट आउटकम मेरे को चेक करना है, तो हाउ इट इज यूजफुल टू द सोसाइटी. सोसाइटी को किस तरह से उसका यूज है, कितने लोग मेरा लिटरेचर में, कितना मेरा वर्क पढ़ रहे हैं, दैट इज माय आउटकम. एंड दैट आउटकम हैज अल्टीमेट मीनिंग, अल्टीमेट इंपॉर्टेंस इज ऑफ द आउटकम. सो मीनिंग इज दैट व्हाटएवर द आई पब्लिश माय कॉपीराइटेड वर्क, हाउ द पीपल यूटिलाइजेस इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. How many people are using those work, it will reflect my work or the quality of my copyrighted work. And that is important. So what I can copyright? Literary works such as novels, poems, plays, reference, newspapers, articles, whatever I am written, that can be copyrightable. Even computer programs, आपने कुछ कोडिंग किया होगा तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी मैं कॉपीराइट कर सकता हूँ. फिल्म बनाई, म्यूजिकल कंपोजिशन बनाया, डांस किया, उसका वीडियो आप कर सकते हो, कुछ इनोवेटिव होगा तो. देन थियोरेटिकल प्रोडक्शन, कुछ भी बनाया आपने, प्लेस बनाया, कुछ भी बनाया, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एडवर्टाइजमेंट, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग एंड मैनुअल्स. So many things are there, you can copyright it. Whatever knowledge you have, whatever the creativity in you, that can be copyrightable. ये जनरल है. टेक्निकल यहाँ पे होना चाहिए ऐसा जरूर नहीं है. इट मे बी टेक्निकल, इट मे बी नॉन टेक्निकल. आपने किसी ड्रामा सेट किया, आपने कुछ तो भी होता है, आपने क्वालिटी की, आपने एक आधा गाना कंपोज किया है, तो यू कैन रजिस्टर यूर अंडर द कॉपीराइट दोज ड्रामा, दोज सॉन्ग, then those composition, those novel, those books, those poems, you can copyrightable. All these are coming under the literary category or the dramatical category or the media category. We can say that all can be copyrightable. इसके ऊपर और डिटेल आगे चल के अपन बात करने वाले हैं. तो कॉपीराइट के रिलेटेड कौन से राइट्स आते हैं? इफ यू आर डूइंग द कॉपीराइट, देन व्हाट टाइप ऑफ राइट्स यू आर गेटिंग? Moral rights to protect the personality of the author और economic rights. दो प्रकार के rights होते हैं. एक तो moral rights, अपनी human conscience को जो भी पड़ता है, that are called as moral rights. And then the economical right. Economical right means financial rights, what you are getting. तो अपन एक एक करके दोनों देखते हैं. What is it? Moral rights are those rights which are based on human consciousness. मतलब मेरे पास ऑल राइट्स है, उसमें से मॉरल राइट कैसा है? कोई भी किताब अगर मार्केट में अवेलेबल है, वेदर आई हैव टू यूज इट डायरेक्टली और वेदर आई हैव टू कॉपी दोज मटेरियल फ्रॉम द बुक्स, इट्स माय कॉन्शियसनेस को मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे कॉन्शियसनेस को पढ़ना चाहिए. वेदर आई हैव टू कॉपी एंड राइट इन द एग्जाम, ये मेरे कॉन्शियस को पढ़ना है तो आई हैव टू डू दैट. उसके लिए कोई ये नहीं, कोई लॉज नहीं है. Whatever the my human conscious says that if the thief कोई भी चोरी करना ये मेरे को पसंद आता है तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता चोरी करने. लेकिन अगर चोरी है तो उसको रोकने के लिए है मेरे पास. So these are my mind, these are my we can say that culture. I say that I don't want to copy it someone work. हमारे जनरल में जब पेपर लिखते हैं हम, उसमें होता है कि प्लेगरिज्म एक करके वर्ड होता है. प्लेगरिज्म इंडिकेट्स दैट हाउ द थिंग्स आई कॉपीड फ्रॉम अदर्स. अदर वर्क को कितना कॉपी किया है.
If it is more than 15%, then our work can be denied by the publisher. Publisher जो होंगे वो deny करेंगे मेरे work को. If it is more than 15%. Throughout मैंने लिखे 20-25 पेज, उसमें से अगर 15% से ज्यादा मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है किसी से थिंग से, तो that is not acceptable. Then right of the authorship, आपने जो बनाया है, लिटरेचर बनाया है, उसकी पूरी ऑथरशिप आपके पास होगी. So how to use it? Others property is my human rights, moral rights. मेरा मॉरल अगर बराबर नहीं होगा तो मैं हमेशा कॉपी करने की कोशिश करूंगा. मेरा खुद का कुछ नहीं करूंगा. मैं किसी का कॉपी पोएम चुराऊंगा, मेरे नाम से पब्लिश करूंगा. If my moral right is not good. Digital manipulation. What is it? Digital manipulation means we have a certain image. उसको एक आधा लोगो लेते हैं हम, उसको एडिट करते हैं और बाद में अपना नया लोगो बनाते हैं. That is a digital manipulation. एक आधी इमेज है, उसको ऑल्टर करना और बाद में यूज करना. So all these are coming under the right of the integrity. Whatever you have the moral, then then that is coming under the moral rights. And there is no law to protect this moral rights. Moral right protect करने का कोई भी law अभी तक present नहीं है. कोई भी इसमें कोर्ट में जा नहीं सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया. बाद में फिर उसके लिए प्रूव करते बैठना पड़ता है. So that is the moral. How your moral you have. If you have the good moral, then you are not doing such things. Other one is the economical rights. यहाँ पे ज्यादा झगड़े होते हैं. एक आध बार अपन एक्सेप्ट करते हैं, अपन अपना वर्क किसी ने चुरा लिया तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अपना लॉस हो, दैट वी आर नॉट कंसीडर्ड. Economical rights are those rights which provide economic security to the people. Right of reproduction. कोई भी अपने नॉवेल बनाए, उसका रिप्रोड्यूशन करना है, उसको रिप्रिंट करना है बार बार उसका, तो इसके राइट्स देने पड़ते हैं. अपन तो पब्लिश नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन बीइंग, वो पब्लिशर के पास में जाना पड़ता है. तो पब्लिशर विल ऑलवेज आस्क द ऑथर वेदर रिप्रिंट पॉसिबल और नॉट. If you want to change your content, then you have to change the content and again reprint it. So right of reproduction is with the author. अगर author ने बोला now it is outdated technology, you won't publish my book, publisher can't publish it. Then right of distribution or issuing copy. Publisher को publish करने के साथ साथ distribute भी करना पड़ता है. If you are the distributor, then it is good. But if you are selling your right, if you are giving your right to the publisher, then you cannot sell your book. मैंने मैंने पब्लिश भी किया उसको, लेकिन मैंने मेरे राइट्स दिए हैं पब्लिशर को, तो मैं सेल नहीं कर सकता उसको डायरेक्टली. मैं क्या बोल सकता हूँ, आप मार्केट में जाओ और ये बुक परचेस करो, आपको ऐसा मैं बोलूँ, मैं आपको कुछ कॉपी दे नहीं सकता उसकी. That is the right of distribution always with the publisher. अपन उतना publicize नहीं कर सकता है, अपने limited sources रहता है, but publisher has a wide sources all over the world. So he will take the rights and he will distribute those books and he will get the benefits. Some part of those benefit will be transferred to you. Author को transfer करता है. Right of the communication to the public. जो public performance है, public जैसे कि आज मैं आपको presentation दे रहा हूँ, इसके राइट मेरे पास है. जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसके राइट मेरे पास है. इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग. होल एंड सोल आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस. एनीवन कैन नॉट टेक द ऑब्जेक्शन ऑन दिस बिकॉज इट्स माय प्रॉपर्टी. मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से मैं बोल रहा हूँ, इट्स माय प्रॉपर्टी. पब्लिक परफॉर्मेंस, कोई भी जाता है, सेलिब्रिटी किसी कंट्री में भी जाता है, वहां पे स्टेज शो करता है, तो इट इज नाउ हिज प्रॉपर्टी. उसका शो का लाइव टेलीकास्ट करने का नहीं करने का, ही विल डिसाइड ऑल दोस. इंटरनेट पे भी अपन कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके राइट्स उसके ऑथर के पास होते हैं, उसके ओरिजिन के पास होता है. नो वन कैन डायरेक्टली यूज दोस. नाउ adaptation rights, conversion into another. Adaptation right means just like as the example of the Three Idiots movie, we can say that Chetan Bhagat has a novel authority or author, and Rajkumar Hirani produced those pictures. He is not taking the permission of the Chetan Bhagat, and so Chetan Bhagat was objected on that, and he will be Hirani gives him the lot of money. Then says that it's a author's property, and when you are making its drama on this novel, you have to pay for it.
So that is an example of adaptation right. Conversion one form into the another form, just like a literary to the drama. Abridgment, बहुत बड़ा आर्टिकल है उसको मैं छोटा से फॉर्म में करूँ, कन्वर्ट करूँ, या छोटा आर्टिकल बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, that is called as abridgment right. Then pasteurization means मरने के बाद में भी कोई भी ऐसा, अभी मिर्जा गालिब is the best example, who wrote all those studies, but they never come when the Ghalib is present. उनके मरने के बाद में, उनके जाने के बाद में वो सारा उनका लिटरेचर शायरी आउट हुआ एंड देन इट विल बी पब्लिसाइज, बाद में गालिब को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी. सो ऑल दोज राइट आर कम टू द पेस्चराइजेशन. Then comic formats, if any story, if you want to convert it into the comic form, then you have to do the permission. All these rights, when you are taking the copyright with you, आपने कुछ भी स्टोरी लिखी, उसके ऊपर कॉमिक फिल्म बनाना है, किसी को कॉमिक बनाना है या कॉमिक निकालना है, तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम यू, otherwise it will not possible. So all such rights you have with, when you are taking the copyright, all these rights are with you, then and then all are has to take the permission from you. If they are not taking the permission, then that the violation of that adaptation rights will place. Right to make a cinematographic film or sound recording, ये same thing. Translation rights, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एक बार you transfer your right to someone else. आज मैंने लिखी किताब, मेरे को रॉयल्टी मिल रही है उसकी, when मैं जब ओल्ड एज का हो जाऊंगा, I can transfer those rights to my son, कि सन के खाते में वो पैसे आ जाने चाहिए, या किसी ने और मेरा जो को ऑथर होगा उसके नाम से मैं कर दूंगा कि होल should be transferred to this co-author. That is called the translation right. Rental rights means for some time, भाई एक साल मैं जरा घूमने जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो all those rights, जो भी उसका रिप्रिंट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, उसके पैसे रॉयल्टी लेना है, all those rights I am giving to someone else, to my son, to my co-author. Then that is for timing rights मैंने दिए है, but all those rights should be in the written form. Written form पे रहेंगे तो ही possible होगा, otherwise not. लिटरेरी जो भी वर्क होगा वो ऑथर होता है, ड्रामा जो होता है उसके लिए ड्रामेटिस्ट होता है, म्यूजिक जो होता है कंपोजर के पास राइट होते हैं म्यूजिक के, आर्टिस्टिक होता है जो भी पेंटर होगा उसके पास होंगे राइट्स, जो भी आर्किटेक्चर होगा उसके पास में उसके राइट्स होंगे, फोटोग्राफर के पास फोटोग्राफी, जो भी फोटोग्राफ वो अपलोड करेगा या बेचेगा उसके राइट्स पूरे फोटोग्राफर के पास होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने क्रिएट किया उसके पास उसके राइट होने चाहिए, प्रोड्यूसर के पास फिल्म के राइट्स होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग के पास म्यूजिक जो प्रोड्यूसर होगा उसके पास राइट्स होते हैं. ऑल दीज आर कम्स अंडर द कॉपीराइट. ये सारे कॉपीराइट के अंदर आते हैं, ये आप कॉपीराइट इसका ले सकते हो इफ यू आर एनी वन ऑफ दिस. फिर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं उसमें. मैगजीन, एम्प्लॉयमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन जो भी है, एम्प्लॉयर हैज ए पब्लिशिंग राइट बट अदर राइट्स विद द ऑथर. मींस न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उसका पब्लिशिंग के राइट उसके न्यूज़पेपर ओनर के पास होता है, लेकिन जो भी आर्टिकल लिखा गया है उसमें उसके राइट जिसने भी लिखा है, जो ऑथर होगा उसके पास होने चाहिए. सो आप यू कांट ब्लेम ऑन द एडिटर या ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर को आप क्लेम नहीं कर सकते. आपको पब्लिश कैसे किया इसके लिए क्लेम कर सकते हो, बट ये सच है झूठ है ये सारी चीज आपको ऑथर पे क्लेम करनी पड़ेगी. इफ इट इज अ थेफ्ट आर्टिकल देन यू कैन क्लेम on the author, not the publisher. That you have to be remembered. Then lecture delivery in public, person delivering. इसकी जो मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैं कॉपीराइट है मेरे पास इसका, मैं ऐसा बोल सकता हूँ even though I am not registered still it is. ये रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है, ये ओपन है because it's a non economical activity. एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपन आगे चल के देखने वाले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी होता है इट इज नॉट कमर्शियल बेस्ड, सो दैट्स व्हाई नीड नॉट टेक द कॉपीराइट, बट होल एंड सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माइन.
गवर्नमेंट जो वर्क करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल द गवर्नमेंट्स के पास राइट्स होते हैं उसके. पब्लिक अंडरटेकिंग वर्क, पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी उनके पास राइट्स होता है. इफ टीचर राइट्स ए बुक, देन टीचर हैज अ राइट बिकॉज ही इज एम्प्लॉयड टू टीच एंड नॉट टू राइट. हमने कोई किताब लिखी तो उसके राइट्स हमारे पास होंगे, कॉलेज के पास नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि हम टीचिंग ले करने का सैलरी लेते हैं, हम लिखने का सैलरी नहीं लेते हैं. सो वॉट एवर आई राइट, दैट इज समवॉट एक्स्ट्रा वर्क आई हैव टू डू, and for that the right of those book is with me. I can sell those book, I can reproduce those book, I can publish those book. So whatever I want to do, I can do with those books now. That you have to be remember. क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं उसका जो पेपर सेटर होगा उसके राइट्स होंगे, उसमें सही झूठ बराबर सिलेबस में किया कि नहीं है, all those are the rights with the subject teacher, with the paper setter, and he has to define those. Encyclopedia dictionary, whatever the encyclopedia dictionary are made, all the editor for collection has the rights. But the if a dictionary में जो words दिए उसका मीनिंग सही है कि झूठ है, ये इसके राइट्स तो इसके पास नहीं रहते, बिकॉज ही इज नॉट द ऑथर ऑफ वर्ड्स. उसके मीनिंग लिखने का ऑथरशिप नहीं है उसके पास. He collects all those data and then edit it and publish it. So editor has only the right for the collection. He will not guarantee that whether written is correct or not. So that you have to be remember. Then we have to say that duration of the copyright, that I already told you, life plus 60 years. And if multiple author, expiration is 60 years after the death of last surviving author. अगर मेरे बुक में 3 ऑथर्स है, जो लास्ट में जाएगा, लास्ट में मरेगा, उसके बाद में 60 इयर्स तक वो उसके नाम पे रहेगा. दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. कॉपीराइट ओन्ड बाय द पब्लिशिंग, पब्लिशर होता है उनका 95 इयर्स आफ्टर पब्लिकेशन और 120 फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन. आज मैंने बुक लिखी, मैंने पब्लिश करने के सिर्फ पब्लिशर को दिया, तो पब्लिशर करने के बाद में 95 इयर्स तक उसका पब्लिशिंग हाउस में उसका रहेगा राइट. या जब मैंने लिखी उसके बाद में 120 इयर्स में उसको बोल सकता हूँ कि मैंने वो बुक मेरे नाम पे है. सो all depends upon the what type of agency you are taking. And all other were 60 years from the date of publication. बाकी सब जो मैंने लिखा, जो मैंने पेंट किया, वो सारा वर्क जो है वो 60 इयर्स उसका वैलिडिटी रहेगी और रिन्यू करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं रहेगी. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉपीराइट. राइट्स ग्रांटेड बाय लॉ टू कम्युनिकेटर्स ऑफ द वर्क्स टू द पब्लिक. पब्लिक में जो कम्युनिकेशन करता है, जैसे कि परफॉर्मेंस है, स्टेज शो है, ब्रॉडकास्ट करता है, उनके क्या राइट्स रहता है. Recording, broadcasting and communicating to the public of a live performance is the performance right. जो भी परफॉर्म्स करता है, आज सलमान खान दुबई में जाके कोई शो करता है तो सलमान खान परफॉर्मेंस विल बी द राइट ऑफ सलमान खान ओनली, नो अदर कैन डू राइट. हाँ, ही कैन ट्रांसफर हिज राइट टू द ब्रॉडकास्टर. ब्रॉडकास्ट करते हुए को ट्रांसफर कर सकता है कि भाई लाइव शो इसको टेलीकास्ट करो. वो बेचता है वो राइट्स, उसके पैसे लेता है. That's why they are getting the money. Salman Khan has a value, Shah Rukh Khan has a value. When they are doing the stage show, they are doing the stage performance, so many people are coming to see those performances. And although they purchase those tickets and go to the movie or go to the stage show, so they can sell or they can sold their performance through the broadcasting stations or through the broadcasting channels and take the money from those. So presumption of transfer of performance right to the cinematographic film producer. कोई भी आपकी कहानी है उसके आप राइट ट्रांसफर कर सकते हो फिल्म प्रोड्यूसर को कि भाई आप इसके ऊपर फिल्म बनाओ लेकिन मेरे को इतने पैसे दे दो. So writer has its own benefit. जो डेली करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसने जैसे कि चेतन भगत के बहुत सारे फिल्म बनी है, उन्होंने क्या किया, नॉवेल तो लिख दिए उन्होंने, वो वैसे ही थे, बाद में लोगों ने उसके ऊपर फिल्म बनाने की सोची
तो लोग उनके तरफ अप्रोच हुए, उनको पैसे दिए चेतन भगत को और उन्होंने फिल्म बनाई और वहां से जो प्रॉफिट मिला वो खुद रखा फिल्म प्रोड्यूसर ने। राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं, उनके पास रिप्रोडक्शन के राइट होते हैं। दे कैन लाइव टेलीकास्ट दोज राइट्स। मैच हो रही है वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग दिखाते हैं बार बार वो चैनल पे। वो सारे राइट्स वो परचेस करते हैं, बीसीसी ऐसे वो सारे राइट्स परचेस करते हैं। So that you have to remember. So rebroadcasting, recording and communicating to the public of a broadcast. अभी आप देखोगे कोई भी पुरानी मैच अपन देखते रहता है, कोई भी चैनल ओपन करो पुरानी मैच चालू रहती है, किसी भी गेम्स की आप ले लो, कोई भी पुराना शो दिखाते रहते हैं बॉलीवुड का। मतलब द पब्लिशिंग हाउस, पब्लिशिंग चैनल्स आर टेकिंग द राइट्स फ्रॉम दोज परफॉर्म फ्रॉम दोज बीसीसीआई। जो भी कंपनी हुई उससे राइट खरीदते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं करोड़ में, तब जाके और अपन टीवी पे मजे लेते हैं उसके। व्हाट दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस, जो भी टीवी पे अपन देखते हैं, अपन उसको वॉच करते हैं चैनल द्वारा, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। उसमें वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से उनको पैसा मिलता है। जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपने को, उससे द्वारा केबल थ्रू पैसे लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल चैनल हैज नाउ द पेड चैनल, तो ऐसे पैसे कमा रहे हैं। सो दैट इज देयर एडवांटेज नाउ। The term literary is a copyright law is to be used in a sense somewhat similar to use of word literature in political. Literature जो होता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स का, उसको अपन लिटरेरी वर्ड जनरली डिफाइन करते हैं। Literary work includes but not limited to textbooks, poems, magazines, catalogs, letters, novels, dissertation, lyrics of song, etc. The difference between literary and dramatic is based on the fact that a literary work allows itself to be read. Literary work अपन read कर सकते हैं, while a dramatic text upon which the performance of the play is based. ड्रामेटिक वर्क उसको बोलता है जो लिटरेरी वर्क है उसके ऊपर से वो ड्रामेटिक उसका वर्जन बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, प्ले बनाते हैं, उसको ड्रामेटिक वर्जन बोलते हैं, ड्रामेटिक वर्क बोलते हैं। So now this is the flow exactly of your copyright कैसे करने का, इसका flow है ये। What they are doing, they are saying that filing the application along with fee, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, कॉपीराइट ऑफिस को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और उसकी फीस भरनी पड़ती है। फीस कितनी रहती है अपन देखते हैं, वेरी कम फीस रहती है उसकी काफी। देन ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस विल इशू द डायरी नंबर, आपको डायरी सेंडिंग लेटर टू द ऑथर, लेटर भेजते हैं दोनों पार्टी को और क्लियर करवा लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्शन एंड हाउ दे वेदर दे इट विल ओवरकम और नॉट। If it is overcome, then एक वर्क भेजा है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर ऑब्जेक्शन सक्सेसफुल रहा तो। If the objection is not successful, then application will be accepted and then this will be now scrutinized by the examiner. वो पैनल बैठता है उनका, 3 member panel will sit together and see whether the novelty in that or not, whether it is a copyrightable or not, and if it is copyright discrepancies, if they found any discrepancies, they can send back to the author. If it is not, then the registration will be approved, copyright will be granted, then you will get the copyright certificate, तब जाके आपको copyright certificate मिलता है। तो प्रोसेस ऐसी कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉपीराइट ऑफिस में, then you will get certain registration और डायरी नंबर उसको बोलते हैं, इनिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेंगे अपन उसको, डायरी नंबर बोलता है। बाद में 30 डेज का वो पीरियड लेता है। 30 डेज में आपका जो वर्क है वो ओपन करते हैं ऑनलाइन सारा मटेरियल, और किसी से ऑब्जेक्शन होगा तो आपको मंगवाते हैं। इफ किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड, why your work is complete novel one, it is not taking by from any other source, you have to verify that, and if it is verified then your application will be accepted, otherwise rejected.
Then there are 3-member panel will scrutiny your application, scrutiny your literature. आपने जो लिटरेचर ग्रामेटिकल वर्जन लिखा है वो सभी आप वो ऑब्जर्व करेंगे, and then he will decide whether copyright is granted or not. That is the process. This is exactly site copyright.government.in or copyright.government.in/e-filing. This is a site while doing the copyright, Indian site hai. If you are the first time you are going to be registered, then you have to create your account. User ID और password आपको create करना पड़ेगा under the new user registration. Then once you create a registration, then you have to go the copyright registration form. ये fill करना पड़ेगा आपको. Then these are the 4 or 5 documents that you have to be required. एक form number XIV you have to be filled. Then signature you have to be upload. Statement of particulars you have to be filled, where you can save where you can fill your particular details of your work. Then statement of further particulars, it is related only. Sign should be of less than 5 MB capacity, and then it will generate a acknowledgement slip. Once you pay the fees, it will generate the acknowledgement. You have to print out those acknowledgement slip and one hard copy of your work. जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक कॉपी और जो आपने वर्क सबमिट करने वाली है उसकी एक कॉपी, ये सारा आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा. कॉपीराइट डिवीजन एंड सो ऑन. सो दिस विल बी योर एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन. यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा और बाद में वो प्रोसेस होगा और आपको कॉपीराइट मिलेगा. What you have to do? This is form XIV, then declaration form, statement of particulars, statement of further particulars, copies of work, and no objection certificate. If you are employed, then you have to submit the non-objection certificate. आपको स्टूडेंट लोगों को no objection certificate देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So all these documents you have to be submit online as well as the hard copy to the registrar office, copyright office. क्या हो सकता है कॉपीराइटेबल? बुक्स, न्यू एडिशन ऑफ बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरी, प्लेस, पोएम, सॉन्ग्स, कॉन्क्रीट नोट, कंसेप्ट नोट, लेटर्स, लेक्चर्स, टेबल्स, कमेंट्रीज, डायरेक्टरीज, एनसाइक्लोपीडिया, रिसर्च पेपर, थीसिस, डिसर्टेशन, कॉमिक बुक, पंचांग, टिकट, जो आप पंचांग देखते हो, काल निर्णय या बाकी और पंचांग, ऑल दोज शुड बी कॉपीराइटेबल. Tickets, even movie ticket, play tickets can also be copyrightable. Question papers, vouchers, so many things are there. You can generate any of this and you will get the copyright for this now. For literary dramatic work, only 500 is the fee. आपका फीस होगा सिर्फ 500. अगर आपका लिटरेरी ड्रामेटिक और होगा आर्टिस्टिक वर्क होगा तो आपको 500 रुपये फी भरना पड़ेगा. 2000 रुपये फी उसको मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क विच इज यूज्ड और कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस. आपने एक आधा प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ किया है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने कुछ गाइडलाइंस बनाई है और वो अगर आप क्लेम करते हो कॉपीराइट के अंदर तो यू हैव टू पे द 2000 रुपीज. सपोज फॉर इफ यू आर डिजाइन एनी मोबाइल, सपोज if you are design any mobile and there you are written your company name, suppose or your name XYZ, then it will, if you want to register, if you want to take the copyright of those names, then you have to take the you have to pay the 2000 rupees and so on. If you are providing certain आपने ऐसा ऐप निकाला जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सपोज एम्बुलेंस सर्विस इफ यू वांट टू प्रोवाइड, then you are certain guidelines. Yeah, under these guidelines, you are providing the ambulance service to XYZ customer. Then all those guidelines can be copyrightable, but you have to pay the 2000 for it. उसके लिए आपको 2000 देना पड़ेगा. For example के तौर पे, if I am register one poster and then that poster will be now looking like this. वो जो poster रहेगा वो ऐसा दिखेगा आपको. This is Copyright Office, New Delhi, stamp is here. What I did,
I did one project that is IoT based hand gesture control robotic arm. मैंने उसका मेरा नाम डाल दिया और इसमें ये सारा लिखा मैंने, मेरे प्रोजेक्ट का एक्स्ट्रा सम मूवीज पिक्चर्स मैंने उसमें डाले, फ्लो चार्ट शो किया, इसमें रिजल्ट लिखा है मैंने, देन इट विल बी कॉपीराइटेड। ये इसका कॉपीराइट हो गया मेरा। दिस इज द स्कैनर, उसका कोड है, अगर ये स्कैन करते तो मेरे ये सारे डिटेल्स आपको कॉपीराइट ऑफिस पे के पेज पे दिखेंगे सारे। So we can say that this is one of the example of the poster। आप अभी आगे चल के पोस्टर करोगे, रजिस्टर नंबर जो है इट इज अ डायरी नंबर, वी कैन कॉल इट एज, ये रजिस्टर्ड हो गया, ये नंबर मिल गया मेरे को, रजिस्टर हो गया मेरा ये पोस्टर। सो नो अदर कैन कॉपीराइट दिस पोस्टर नाउ। ये पोस्टर जो मैंने लिया ये मेरा प्रोडक्ट है, या मेरा ये पोस्टर मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, नो वन कैन यूज दिस, इसको और बाकी लोग यूज नहीं कर सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे, इफ यू वांट टू सी माय पीपीटी आई कैन शो दैट नाउ। वो पीपीटी भी ऐसा हो सकता है कि व्हाट आई एम डिड पावर डिसिपेशन इन सीमॉस, सीमॉस इज वीएलएसआई टॉपिक, वो पीपीटी मैंने बनाई और उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भेजी थी, इट गेट कॉपीराइटेड। ऐसा सिंबल आ गया, ये स्कैनर आ गया, सो इट विल बी कॉपीराइटेड। इट्स अ सिंपल पीपीटी, आप भी ऐसे बना सकते हो कुछ भी और उसको कॉपीराइट करवा सकते हो। सो इट इज इंक्रीज योर बायोडाटा, एंड इफ यू वांट द कमर्शियल बेनिफिट यू कैन गेट दैट कमर्शियल बेनिफिट आल्सो। Once you got the copyright, then what is your role? You can transfer your rights to other also। सारे के सारे राइट आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने नॉवेल बनाया, उसको पब्लिशिंग हाउस को मैं पूरे के पूरे राइट दे सकता हूँ, भाई इसको तू डिस्ट्रीब्यूट कर, इससे पैसा कमा, कुछ भी कर, मेरे को इतने इतने पैसे दे दे। सो दैट होल राइट कैन बी ट्रांसफर्ड, पार्शियल राइट कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड, पार्ट ऑफ राइट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। मीन्स ऐसा मैं बोलूंगा कि आप पब्लिश करके देखो, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में करूंगा मेरे नॉवेल का, तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट इज विथ मी, while publishing right is with the publisher, ऐसा भी पॉसिबल होता है। But transfer of rights is not valid unless that transfer is in writing। आपको उसको ट्रांसफर के जो राइट्स है, आपने क्या क्या राइट्स दिए हैं पब्लिशर को, वो ऑन पेपर लेना पड़ेगा। If it is not on paper, then it is not acceptable by the law। Then you will be in the crunch। So that is not, only it is possible when it is now on paper। Two types of rights that can be on paper possible. One is assignment, second one is a license। What is the difference between them? Assignment transfer the copyright from author to the publisher। Assignment मतलब होता है पूरे के पूरे rights मैंने author के publisher को दे देना, that is called as a assignment। While the license merely transfers circumscribed or limited rights to the publisher। पूरे के पूरे right transfer नहीं करना है। If you want to transfer only limited rights, then it is called as a license। उसको बोलेंगे license। जनरली अपन जो पब्लिश करते हैं, हम जो पेपर्स वगैरह पब्लिश करते हैं जनरल में, तो पब्लिशर विल टेक द असाइनमेंट फ्रॉम अस एंड नॉट द लाइसेंस। असाइनमेंट करने से क्या होता है, उसको पूरे राइट्स मिल जाते हैं, और अपने को क्या रहता है कि अपने को मेरा पब्लिश होने का जरूरी रहता है। वी डोंट वांट, दिस इज द एजुकेशन कम्युनिटी, दे डोंट वांट टू कमर्शियलाइज देयर लिटरेरी वर्क। मैंने पेपर लिखा, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं रहता उसके पीछे कि मैं इससे पैसा कमाऊं। So what they are taking the whole rights from us, that is called the public, that is called the assignment। और असाइनमेंट साइन करवा लेते हैं हम लोगों से, और लाइसेंस नहीं बनवाते हैं पब्लिशर, because it has a benefit that whole control will be there in hand। एजुकेशनल फेयर, एजुकेशनल सिस्टम में क्या होता है, नॉन कमर्शियल इंस्ट्रक्शन और करिकुलम बेस्ड टीचिंग बाय एजुकेटर टू स्टूडेंट्स एट नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें सारे जो राइट्स होते हैं वो नॉन कमर्शियल बेसिस पे होते हैं। हम आपको फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, whatever you are getting from us, that is free of cost, we are not getting anything for that। Once I can, if I am getting the copyright anything, then it will be benefited।
otherwise not. कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सारा नॉलेज आता है, लेटेस्ट नॉलेज आता है, रिसर्चर विल पब्लिश दोज नॉलेज टू दैट इज नॉन कमर्शियल बेसिस. वर्कशॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, जनरल्स होते हैं, ऑल दीज आर द एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड रिलेटेड टू द एजुकेशन, दे आर नॉन कमर्शियल बेसिस. वो सारी चीजें नॉन कमर्शियल बेसिस पे होती है. Even generals may be copyright and e-generals. All the e-generals, they are taking the assignment or license from the author. Research program users can copy up to 15% of general issue, distribute to colleagues within the institution and use for educational purpose. अपने e-general में पेपर सबमिट करते हैं तो 15% अपन कॉपी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. कोई भी प्रीवियस जनरल का जो भी आर्टिकल रहेगा उसका सिर्फ 15% अपन ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं. और जो भी once it is published in their journal, I can't give those articles to any of my friend. मैं बहुत करीब फ्रेंड को दे सकता हूँ, अदरवाइज दे हैव टू डाउनलोड फ्रॉम देयर साइट. वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा उनको, जो भी पब्लिकेशन जनरल होगा वहां से उनको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको भी वो आर्टिकल चाहिए. आई कांट प्रोवाइड दोज आर्टिकल. I cannot distribute those article to anyone now. So indirectly I have the group of rights. Once I taking the copyright, मैंने एक बार copyright ले लिया तो मेरे को एक group of rights रहेंगे. क्या रहेंगे? Copyright हो गया, reproduce the work in copies, उसके number of copies मैं बना सकता हूँ. Distribute those copies, मैं जिसको distribute करना है उसको कर सकता हूँ. Publicly display or perform, पब्लिकली में सारा मेरा आर्टिकल वर्क जो है वो सारा मैं पब्लिश कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ. मेक डेरिवेटिव्स, एडप्शन मीन्स उससे कुछ मैं और एडवांस बना सकता हूँ, उससे छोटा कर सकता हूँ, उससे बड़ा कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कुछ भी. इफ आई हैव द कॉपीराइट राइट्स विथ मी. ऑथराइज अदर्स टू यूज एनी ऑफ दिस राइट. और जो मेरे राइट्स है वो मैं दूसरे को भी दे सकता हूँ, किसी को अगर मेरे को बेनिफिशियरी जो है उसको दे सकता हूँ. So all things, if I am taking copyright, all rights with me now. These are the options. That means transfer all rights to the publisher. That is called as a traditional right. Licensing, some part of the rights can be transferred. Addenda. What is addenda? Addenda means somewhat assignments or somewhat amendment in the license. एक बार license कर लिया, राइट इज ट्रांसफर टू द पब्लिशर. लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे को और इनको देना चाहिए, 3-4 राइट्स पहले दिए थे, वो आगे 1-2 राइट्स और देना चाहिए, तो आई हैव टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट एंड दैट अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज अ अडेंडा. उसको बोलते हैं अडेंडा. इट विल रिक्वायर सर्टेन निगोशिएशन, कौन से राइट्स पब्लिशर को चाहिए और कौन से राइट्स अपने को देना है, तो इट विल बी निगोशिएबल. ऑथर के क्या जरूरत होती है? ऑथर शुड, आपने कोई भी ऑथरशिप ली किसी भी आर्टिकल की, तो शेयर वर्क विथ कलीग्स. आपने कुछ भी बनाया तो आपको फ्रेंड्स को दिखाना है. मेरे को भी, मैंने राइट्स ले लिए, मेरे को मेरे कलीग्स को दिखाना है, मेरे स्टूडेंट को दिखाना है, तो आई नीड सच राइट्स. डिस्ट्रीब्यूट एट कॉन्फ्रेंसेस. कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो इट इज मोर पब्लिसाइज हो जाएगा, इसलिए मेरे को में भी मेरा वर्क पब्लिश करना पड़ता है. देन सेल्फ पब्लिश भी मैं कर सकता हूँ. देन सबमिट टू द ओपन एक्सेस रिपोजिटरी. मैं गूगल पे भी डाल सकता हूँ उसको, जो भी गूगल पे मेरा वर्क जो है, मैंने पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, सभी मैं ओपनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. क्योंकि ये मैं ऐसा क्यों करूँगा? आई नीड द पब्लिसिटी. मेरे को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. आई एम ऑथर ऑफ सो एंड सो फील्ड. So other authors will contact with me, other researchers will contact me, they will read my article, they will read my paper and discuss. My circle will increase. वो बताएंगे मेरे को XYZ journal is very good, you can publish there. Then again I will get certain motivation to publish my future work in that journal. So like this, एक कम्युनिटी में, रिसर्च कम्युनिटी में मेरे को मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ाना है, तो आई हैव टू पब्लिसाइज माय वर्क. आपने स्टूडेंट में आपने एक अलग सॉन्ग कंपोज किया, तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा यू आर कंपोजर ऑफ दो सॉन्ग. तो you must have those rights so that you can distribute those composed songs to various composers.
आपको उसके बदौलत दूसरा काम मिल सकता है। म्यूजिक कंपोजर आप भेज सकते हो, ओके मैंने ये सॉन्ग कंपोज किया है, इफ दे लाइक दे विल कॉल यू एंड दे विल गिव you the film of his film then. So like this it can be once you got the copyright, you can do all those things, all those rights with you. No one can claim your song, no one can claim your work and so on. Use in class, मैं क्लास में यूज कर सकता हूँ ये सारी चीजें अभी, like that all those rights with the author को इसलिए चाहिए. What the publisher requirement, publisher को क्या चाहिए, publisher पैसा देखता है. So he want, if the book is famous, novel is famous, the number of copies उसको बनाना पड़ता है. जितनी ज्यादा कॉपीज बेचे जाएगी उतना उसका पैसा मिलने वाला है उसको. So he want the right of reproduction, he want the right of distribution, he want the right of derivative. Derivative means जो भी वर्क नॉवेल आया उससे एक इतना बड़ा नॉवेल पढ़ना नहीं होता, उसका छोटा सा एक किताब बनाना, उसके राइट वो किसी और को दे सकता है. डेरिवेटिव्स, उसके ऊपर से फिल्म बनाना है वो बना देगा कोई भी, उसके राइट उसके पास होना चाहिए. एडिटोरियल कंट्रोल, उसको एडिट करने के राइट्स, कुछ कम ज्यादा स्पेस कम ज्यादा हो गया, फॉन्ट अलग करना है उसको, वो सारे राइट उसको पास होने चाहिए. Digital archiving, nowadays the soft copy should be maintained by all the publisher, so उसका डिजिटल में कन्वर्शन उसको एक्सपेक्टेड है, उसके राइट्स चाहिए, फॉर्मेटिंग करने के राइट्स चाहिए. Then if full rights are retained by the author, then he has full rights, वो कुछ भी कर सकता है. Some rights retained, then limited with him, so he has to negotiate with the publisher, otherwise no. If no rights retained, then fair use or permission, कोई भी right नहीं है तो publisher जो भी करेगा वो करेगा. Like this, क्या करना चाहिए फिर ऐसे वक्त आपने क्या करना चाहिए, ऑथर ने क्या करना चाहिए. Know what rights you want to retain, आपको पता होना चाहिए कौन से राइट आपके पास रहने से आपका फायदा होगा. आइडेंटिफाई द पब्लिशर, कौन से पब्लिशर के थ्रू आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं. मैंने बुक लिखी, मेरे को टाटा मैकग्रॉ हिल, प्रेंटिस हॉल, ऐसे जो रिनाउंड पब्लिशर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसमें उसमें मेरे को ज्यादा पैसा मिलने वाला है. तो आई हैव टू आइडेंटिफाई दोस पब्लिशर्स, वो मेरे को पब्लिशर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बाद में रीड द पब्लिशर एग्रीमेंट, वो जो असाइनमेंट अपने से बनवा लेगा या एग्रीमेंट बनवा लेगा उसका रीड करना पड़ेगा मेरे को. एंड देन ऑफ पब्लिशिंग ओपन एक्सेस जर्नल, कौन से जर्नल में मेरे को पब्लिश करना है, ये सारी चीजें मेरे को मालूम होनी चाहिए. इफ आई नो दिस इंफॉर्मेशन, देन एंड देन आई कैन पब्लिश माय डॉक्यूमेंट और आई कैन गेट द कॉपीराइट फ्रॉम देम, अदरवाइज नॉट. ठीक है. License and mark. What is license exactly? The license is a contract. ट्रांसफर कॉपीराइट, एक बार कॉपीराइट मिलने के बाद में उसको राइट्स को ट्रांसफर कैसे करते हैं वो लाइसेंस में लिखा रहता है. The mark is a standard symbol that content consumers can recognize and trust. वो एक सिंबल बनाते हैं, वो सिंबल में वो बताते हैं कि ये सिंबल रहेगा तो what type of license it is. Let us see one by one. First one is attribution. It is a type of the license and the symbol or mark is this now. ऐसा symbol रहा कोई भी article पे तो it is come under the attribution. The license lets other distribute, remix, tweak and build upon the work even commercially as long as credit is given to the original creation. Attribution करके एक license आता है type का, उसमें ऐसा define कर सकते हैं अपन, उसमें right transfer कर सकते हैं to distribute, to rechange, to tweak or build upon the work commercially उसको यूज कर सकता है. जो आपका वर्क रहेगा वो पब्लिशर कमर्शियली उसको यूज कर सकता है, बट क्रेडिट शुड बी गिवन टू द ऑथर, ऑथर को क्रेडिट देगा. देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एट्रीब्यूशन, उसको एट्रीब्यूशन बोलता है. Another type of license is non-commercial. This license allows other remix, tweak, build upon the work non-commercially. वो मॉडिफाई कुछ भी कर सकता है, पब्लिशाई कर सकता है, सब उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको रिपब्लिश भी कर सकता है, बट द ओरिजिनल ऑथर को वो क्रेडिटेबिलिटी देगा. देन इट विल बी ए नॉन कमर्शियल लाइसेंस एंड द सिंबल विल बी नाउ लाइक दिस. उसका जो मार्क रहेगा तो ये रहेगा. नॉन डेरिवेटिव वर्क,
It is another type of the license. This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole with credit to the creator. क्रेडिट तो ओरिजिनल ऑथर को देगा ही, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं करेगा. नो डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में चेंजेस करके उसको रीप्रिंट करवाना, बहुत बड़ा आर्टिकल है उसको छोटा करके उसको करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस लाइसेंस. एंड सिंबल फॉर दिस इज दिस share alike. This is fourth license. This license lets other remix, tweak, build upon the original as long as there is credit and it is licensed as a new creation under same terms. उसको चेंज करके फिर से नया लाइसेंस लेगा, उसको ओरिजिनल वर्क को चेंज करके. If the author gets the new license, then it will be a share like category of the license. And the symbol for share alike should be now like this. So all such type of the four that license we have to study, and then you have to decide what type of rights you want to transfer, what type of copyright. Once you got the copyright, what type of rights you want to give to the publisher, that you have to your own discrimination. ये आपके अंडर आएगा, आपको थिंक करके उसको डिसाइड करना पड़ेगा. So this is all about from my side. Now it is open to all for the discussion and the question and answer now. Student, if you have any queries, sir is available with us. You can have your queries. If you want to ask anything, if you have not got anything, Haridas sir is with us. Anyone having any query? Yes, Mr. Mohit, you have raised your hand. Please, Mohit. Yes, sir. Sir, I have one question for you. Sir, why China? Sir, China ने तो सर बहुत कुछ कॉपी किया है सर, तो फिर चाइना पे तो केस होना चाहिए. जैसे वो MI का फोन है, उस पे भी किसी ने कुछ नहीं किया, और सर पूरा का पूरा यूरोप कॉपी किया है उन्होंने. No, it is our observation or it is our prediction, but Chinese are not agree with this. They can prove that whatever they are doing, that is the correct thing, and it is under the jurisdiction. वो कोर्ट के jurisdiction में आ रहा है, international court के अंदर. We can't say that they are copying something. ऐसा बोल नहीं सकते. अभी जैसे कि for example for India से कमेंट करें, अगर पतंग बनाना है, मांझा जो नायलॉन का मंजा आ रहा है आजकल, पतंग का सीजन है इसलिए पतंग का एग्जांपल लिया, नायलॉन का मंजा आ रहा है. अपन ने आज तक नायलॉन का मंजा नहीं बनाया था. अपन ने वो कैसे सीरस का मंजा बनाते थे या फिर वो अदर धागे का मंजा बनाते, नायलॉन का मंजा कभी नहीं बनाया. नायलॉन प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम चाइना. And how you are saying that since it is a manja, it is not it is not copyrightable? No, it's not like that. For nylon manja, they can take the copyright or they can take the patent for that. So even though it is a manja, it is something different kind of manja. They can get the patent or the design intellectual property right. ऐसा बहुत सारे हैं. आप जो बोल रहे सवाल चाइना का, ऐसा प्रेडिक्शन है, ऐसा अजम्पशन है कि चाइना ने बहुत सारी चीजें कॉपी की है. आप मेरे को बताइए आप सब लोग कि आज चाइना इतना क्यों प्रोग्रेस कर रहा है. कितने सारे टॉयज उन्होंने मार्केट में लाए, इंडियन मार्केट में आए. क्या बाकी लोग बना नहीं सकते? क्या बाकी लोग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं. चाइना हैज अ मास प्रोडक्शन ऑलवेज. मेन एडवांटेज ऑफ चाइना इज मास प्रोडक्शन. अपने यहाँ क्या होता है, अपना कुछ भी हो गया ना तो अपन स्ट्राइक कर देते हैं. ये बात पटेंगे तो स्ट्राइक करते हैं. चाइना में स्ट्राइक नहीं होता है. दे व्हाट दे आर डूइंग जनरली बोल रहा हूँ, नॉट 100% बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग द मास प्रोडक्शन. मीन जरूरत से ज्यादा बना के रख देते हैं. तो जो इंडस्ट्री रहती है उनको सोचना पड़ता है इतना माल के अपन करे क्या, तो फिर कॉस्ट कम हो जाती है उसकी, और जो भी डिमांड रहती है वर्कर लोगों की वो कंप्लीट हो जाती है. So this is Japan or Chinese technique. They are producing very big in mass, very big things, and in mass volume.
कोई भी चीज बहुत बनाना ना उसका कॉस्ट कम हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, और उसका करना क्या यूपीएससी के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम रहता है. सो इट इज नॉट कंप्लीटली 100% ट्रू. मेरा भी ऐसा सोचना है कि चाइनीज आर डूइंग द कॉपिंग थिंग्स, बट वी हैव टू प्रूव दैट वेदर दे आर डूइंग कॉपी और नॉट. If you have a certain objection, go to the court, prove that it is your product and China is copying for that. If other countries can't do this thing, then China has a right to sell out those products and accept those copyrights and all those things. Yes, sir. Anyone else, student? Anyone want to ask anything? Anyone is having any query? Okay. So, with the kind permission of chair, I would like to propose a vote of thanks. Thank you, sir, for a wonderful session. I, Professor Imran Khan from Basic Science and Humanities Department, take this opportunity to propose a vote of thanks. I would like to thank our today's expert speaker, Dr. Sanjay Haridas, sir, for sharing deep insight of intellectual property and copyright. I'm sure this session will definitely help our students to enhance their knowledge and awareness, and this will motivate students to have intellectual property right or copyrights. Once again, I would like to thank Dr. Sanjay Haridas, sir, for taking time out from his busy schedule and enlightening us. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thanks Yes. to all first year department, Imran sir, Gupta sir, and all other team, and thanks to my dear students also. What a wonderful queries from them. Even though it is very less, but all are the logically correct queries. Means they are not asking anything. So that's why it's a pleasure to answer me those questions also. Thank you very much, sir, and thank you very much, student also. Uh, Okay. Excuse me, Imran sir. yes, Sir, yes, ma'am. I would like to thank you on behalf of first year department. Thank you very much for your valuable time, sir. Thank you, madam. I would like to take this golden opportunity to thank our management as well. Respected Shri Sanjay Ji Agarwal, sir, Chairman Jaidev Education Society. Respected Shri Ajay Ji Agarwal, sir, Secretary Jaidev Education Society. Shri Jayesh Ji Goyal, sir, member of Jaidev Education Society, for their constant support and motivation. Thank you, sir. I would also like to thank Professor S.N. Bang sir, Director Jeju Education Society, Shri Avinash Dosadwar sir, Executive Director Jeju Education Society, for their constant encouragement and constant support. Thank you, sir. I would also like to thank our beloved principal, Dr. S.V. Sonika sir, for giving us opportunity to organize such type of event in the department. I hope this series of session will continue in future as well. Thank you, sir. I would also like to thank Dean Admission, Promotion and Development, Dean Students, Dean Academics for their encouragement. Thank you, sir and ma'am. I would also like to thank Dr. Amit Gupta, sir, Head of the Department, Basic Science and Humanities Department, for their constant support and guiding us for the conduction of such program. Thank you, sir. I extend my gratitude to the respected head of the departments of JD College of Engineering and Management for spending their time with us. I sincerely thank all teaching, non-teaching, technical staff, student volunteer for helping in making this program a grand success. Last but not the least, I thank my fellow students for their presence in the program. Without you, the program would not have been a success. Thank you once again, thank you everyone. There is one instruction for the student. Student, please don't leave the meeting. I need to give one instruction to you as well. Sanjay sir, Haridas sir, if you want, you can stay in the meeting or you can leave the meeting, sir, if you have some work. Thank you. Thank you, sir. Thank you for spending your time with us, sir. Okay. We are highly obliged, sir. Thank you, sir. Thank you.
Students, there is an instruction from you. From today, we are celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav. Do you have Sagar sir have given you instruction regarding this, isn't it? Right? Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes, So sir. from today onward, we are celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav event. Today at from 3 to 4 a.m. Sorry, p.m. We will be having the activity of best from the waste. I think you guys are aware of this activity. So you have to be ready with your material, whatever material you are having, to prepare the best articles or best product which you have, which you can. Okay, student. So all the very best for this activity. We will meet you, your teacher guardian, your class teacher will join the meeting, and you'll have to do the activity like best from the best. So all the very best for the student. And with this note, I will like to conclude today's session. Thank you everyone. Thank you for the patiently listening to me and sir. Thank you students. Now you can leave the meeting. Thank you, sir. Thank you Thank you, everyone. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.